बाप और बेटा रूहल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामताबक मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं ताकि तुम ठोकर ना खाओ। तुम इबादत खानों से निकाले जाओगे, बल्कि वो वक़्त आता है कि जो कोई तुम्हें कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ, और वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना और ना मुझे, मगर मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं ताकि जब इनका वक़्त आए तो तुम्हें याद आ जाएगा कि मैंने तुमसे कह दिया था। रूहल कुद्दुस के काम। और मैंने शुरू में ये बातें तुमसे इसलिए ना कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं उसके पास जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है। और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तफसीलवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तुम उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, और ये कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है, इसलिए इसके क्या मानी है हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु को ये मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, और उसने उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। जब औरत दर्दजा में मुब्तला होती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसका वक़्त आ पहुँचा।
لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس خوشی کے سبب سے کہ ایک انسان پیدا ہو کر دنیا میں آیا اور درد کو پھر یاد نہیں کرتی، پس اب تم غمگین ہو، مگر میں تمہیں پھر دیکھوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا، اور تم اس دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو گے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ میرے نام سے تمہیں دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو تم پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی کامل ہو۔ میں نے یہ باتیں تمثیلوں میں تم سے کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ میں تم سے تمثیلوں میں پھر نہ کہوں گا، بلکہ باپ کی خبر تمہیں صاف صاف دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تمہیں پیار کرتا ہے، کیونکہ تم نے مجھے پیار کیا اور ایمان لائے ہو کہ میں خدا سے نکلا ہوں، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور تمثیل میں نہیں کہتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے سوال کرے۔ اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ اب تم ایمان لاتے ہو۔ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ چکی ہے، کہ تم سب اپنے اپنے راہ لے کر پرگندہ ہوگے، اور تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ تم مجھ میں سلامتی حاصل کرو۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے تو ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔